Now, hello class 10th. Just after the combination of register, our new topic for this video lecture is heating effect of current electricity. Now, what do you mean by heating effect? You see the electric iron when we just plug in, and after some time we can easily iron on our cloth. Is it a heating effect of electricity? Just wait. Right now I think you are watching my video on a particular device, maybe a mobile, maybe a laptop. Just for a second, please check the temperature on the back side of a mobile and the particular temperature of a laptop in a sideways. Please check. Maybe it is something happened with your device. Maybe little temperature is going to increase when you take the particular use of your gadget for a long time. You can easily understand the concept of heating effect. Like, see the particular picture. एक particular picture के अंदर एक person run कर रहा है. Okay? That means for the particular task, एक जो task assign किया है run करने के लिए, which will be complete, ये complete होगा अगर इस particular person के अंदर sufficient energy होगी, और ये sufficient energy हमें अपनी body से जो भी हम whole day particular food लेते हैं उनसे convert होती है. Okay, that means in our body we have a sufficient energy. Right now I am teaching to you and right now you are watching my video. Okay, now this particular energy in the case of this particular person who run on the particular track, this particular energy just increase or convert in its kinetic energy. That the reason he run. Okay, now ये जो पूरी की पूरी एनर्जी होगी वो एक पर्टिकुलर पर्सन रन करने में, और उसका टारगेट होगा कि मैं कैसे भी करके फर्स्ट पोजीशन पर आ जाऊं. बट on the other side, see the particular next picture. The particular person feel sweating and see the particular temperature. जब भी आप प्लेग्राउंड में खेलते हैं, जो आप अपनी पूरी एनर्जी पर्टिकुलर गेम को खेलने में लगा देते हैं, आउटडोर गेम, नॉट अ पर्टिकुलर मोबाइल गेम. ओके, so then afterward you can see so much sweating and a little bit the temperature of the body also increase. What is this? This is the effect of the energy. This is a heating effect जो हम कंसीडर नहीं करते. जो स्वेटिंग है, बॉडी का टेम्परेचर है, ये भी जो पर्टिकुलर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर थी, ये भी इस पर्टिकुलर टास्क जो इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए रन करने का जो टास्क है, इसके साथ में ही स्वेटिंग एंड द पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑल्सो इंक्रीज. दिस इज अ इफेक्ट. And this effect is known as a heating effect. And the same way when we talk about the current electricity, so we know that for our previous knowledge, battery maintains the potential difference. Due to this, electron can flow in the electric circuit. इसलिए जब आप पर्टिकुलर मोबाइल और पर्टिकुलर लैपटॉप, स्पेशली लैपटॉप में ज़्यादा फील होगा अगर आप उसको बहुत देर तक यूज़ करें. साइड में जो फैंस होते हैं लैपटॉप्स के, वहाँ पे थोड़ा सा टच करके देखिएगा, टेम्परेचर लिटिल बिट इंक्रीज होगा. इसलिए लाइक दैट इस हैबिट को चेंज करने के लिए मोबाइल डिवाइसेस कंपनी आजकल कूलिंग पैड लगाती हैं बैक साइड के अंदर. ओके, सो नाउ दिस पर्टिकुलर electric energy is maintained by the cell or battery in the electric circuit, but after some time you can see that even your mobile and your particular laptop also, this particular potential difference maintained by the battery, and that the reason if your working hour is increased on your laptop, on your mobile, so little bit temperature also increase. It is a practical situation. Okay, you see my faces. As I am also running here, so some sweating and a little bit body temperature also increase. ये कहाँ से आ रहा है? ये बॉडी के अंदर जो एनर्जी है ना, वही कन्वर्ट करती है. Okay,
बट हम इसको ध्यान नहीं देते. लाइक दैट इफ़ वी जस्ट स्विच ऑन द पर्टिकुलर स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, सो हमारा टास्क होता है कि इलेक्ट्रिक फैन हमें एयर प्रोवाइड करेगा. दैट द रीज़न द ब्लेड्स ऑफ द फैन इज़ मूविंग. हमारा मेन टास्क है कि सारी की सारी जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए. मीन्स व्हेन एवर वी स्विच ऑन द पर्टिकुलर स्विच, सो दैट द रीज़न जो पर्टिकुलर ब्लेड्स होती हैं फैन की वो मैकेनिकल रोटेट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इन मैकेनिकल एनर्जी एंड वी फील एयर. बट द सेम टाइम फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन इफ़ अगर आप आपका फ़ैन को यूज़ कर रहे हैं, दैट द सेम टाइम द टेम्परेचर ऑफ द फैन ऑल्सो इंक्रीज. ये भी वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक एनर्जी ही आपको प्रोवाइड कराती है. सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी ब्यूटिफुल नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी heating effect of when an electric current passes, okay, through a bulb. You see the bulb is glow, but same time after some time when you touch the particular bulb, not LED one, old one bulb, okay, which have a filament, so you see you cannot easily touch because the temperature of the surrounding surface will be very hot. Okay, please don't try. Okay, if you want to just change the particular bulb, so please take the small cloth of, okay. So now when an electric current passes through a bulb, the filament gets so hot that is glows and emit light. When a current passes through the filament of an electric iron, definitely the iron becomes very hot. This increase in temperature, okay, this increase in temperature is due to what is called the heat produced due to the current. Like in an example of fan, our aim that electricity will completely cover, और इलेक्ट्रिसिटी हमारा एम ये रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाए और हमें 100% मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करे, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करे. बट प्रैक्टिकली इट इज़ रॉन्ग बिकॉज some part of energy also we call the word dissipation. कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है. इट मे बी अ लॉस इन द एनर्जी. हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी नहीं मिल पाती बिकॉज सम एनर्जी ऑल्सो कन्वर्ट टू हीट अप द डिवाइस. Heat up the device. This is a practical situation and this particular heating also ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी. यही एनर्जी हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रही है और यही एनर्जी उस डिवाइड को हीट भी कर रही है. लाइक अ हीट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी हैव टू रोल्स. दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. Now next we are going to develop some mathematical here. In the next section we are going to derive mathematical formulation about the heating effect. Heating effect means energy, and we know that work done and energy same thing. Okay, here energy is heat energy. Okay, heat. Now consider a current I flowing through a resistor of resistance R. Look at here a particular circuit. Here the resistance R. Here is one particular cell or here is particular, we consider here particular cell connect with the key. Here is a voltmeter and here we apply one ammeter. So here the current I flowing through a resistor of resistance R, let the potential difference across it will be V. Here the potential difference will be V. Let in time t during a charge q flows across it, means the battery pushed the particular free charge inside the circuit, and due to this in time t q charge flows across it. The work done in moving the charge, the work done in moving a charge q through a potential difference V. And here we know that work done, look at here, the particular work done over the charge is known as electric potential. We know that. So here V is, we can write the total work done. So the total work done here we can say total work done will be equals to VQ. Very important. So how much work done required? This particular work done required to push the charge, to move the charge inside this particular circuit. Now
Therefore, the source must supply, this particular source must supply energy equal to work, and which will be here this much energy required to supply in the circuit in time t. Hence the power input to the circuit by the source. So how much power required, how much efficient our power supply is, हमें यहाँ पे देखना है कि इस सेल को कितना पावर लगाना पड़ेगा. So no problem, we know the basics of the physics like that. In time t, if some work done happen like that, w by t, the particular work done in a particular time, this particular physical quantity in a physics known as power. Okay, so we can note down power will be equals to, power will be equals to w by t. Okay, now hence the power input to the circuit by the source will be this one, and how much work done in the terms of power we can write w equals to power into time. Now again we want to solve this particular expression, means how much the power input to the circuit. So we know that the total work done, give the equation number here, this is the total work done VQ. So now here the total work done will be VQ upon T. So this much power. Okay, and by the basic of electricity we know that the rate of, that means the ratio of Q by T will be give us current I. So we can easily note down here power will be equals to VI. This is very very important. Here power will be equals to VI. Now look at here, जो particular device heat up हो रहा है, तो heat up होने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. वी नो दैट अगर पर्टिकुलर चार्जेस को फ्लो करना है तो बैटरी को सर्टेन वर्क डन करना पड़ेगा. वर्क डन कितना था, अगर उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है, सो वी नो दैट द पर्टिकुलर वर्क डन विल बी VQ. नाउ द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम t. We know that energy and work done the same thing. Okay, we already find the power. Look at here this because work by time is known as power. Okay, so we can say work done will be equals to power into time. So here we know that this is a particular energy. जो work done है वही आपकी energy है. Work done and energy is same thing. Okay, so we can write here, because in the previous one we know that P equals to VI. Okay, now the total work done will be, here we can write VIT. Okay, understood. Now this energy, this work done, ये जो work done है यही energy. Okay, if you, in the simple language, if you want to assign a particular symbol for energy, we can say here energy H, because यहाँ पर heat energy है. Okay, so we can also write like H equals to VIT. Okay, now this energy get dissipated in the resistor as a heat, और ये की energy dissipate होगी, loss होगी in the resistor as heat. मैकेनिकल लाइक अ फैन के अंदर मैकेनिकल एनर्जी होगी, बट दिस सेम एनर्जी गेट डिसिपेटेड. एनर्जी का लॉस होगा, कितना होगा, इतना एनर्जी का लॉस होगा. ओके, thus for the steady current means when the particular current is continuously moving in the electric circuit. Okay, thus for the steady current I, the amount of heat H, मैंने ऑलरेडी असाइन कर दिया है, the amount of heat H produced in time t is same. H will be equals to VIT, because work done and heat same thing. कंटिन्यूस करंट फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूस करंट फ्लो होने के साथ साथ जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा विल बी H equals to VIT. And if you want to note down in a simplest language in the terms of current only, पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस एक्सप्रेशन हम चेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट बाय ओम्स लॉ वी नो दैट V equals to IR. Now put here please. So H will be equals to IR and IT. So H will be equals to I square RT. मीन H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी मीन्स जो पर्टिकुलर हीट है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है.
ओके, एंड रेजिस्टेंस के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, एंड टेम्परेचर डेफिनेटली जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली हीट तो बढ़ेगी. Okay, so yes, we can say that here the heat is directly proportional to the square of the current and directly proportional to the resistance of a particular circuit, in a particular circuit, and definitely when we are going to increase the temperature, definitely heat will also increase. This particular thing is known as Joule's law of heating. Very important. ठीक है, again you see this particular concept, I think you easily understand.